my third session, and today I am going to solve your biggest confusion based on k sound. Well, C and K, they both are sharing same sound. तो spellings का confuse होना तो लाजमी है. But today I am going to share few secrets which will definitely help you to build a spelling. Okay, friends, whenever spelling starts with k sound, in most of the cases, it is C. The word C has been used there. I said most of the cases, not all. And whenever the spellings end with the k sound, in most of the cases, it is K. Again, अगर कोई स्पेलिंग k साउंड से स्टार्ट हो रही है तो मोस्ट सीन में वहां हम C का यूज करते हैं, और अगर कोई स्पेलिंग k साउंड पे एंड हो रही है तो काफी केसेस में वो K का ही वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, लेकिन ये मोस्ट सीन्स हैं, सारे नहीं, इसीलिए ये गलती मत करिएगा. नाउ अगर K साउंड से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो काफी हद तक उस स्पेलिंग के बाद या तो I आता है या E. ओके, I और E साउंड के यूज से k साउंड काफी लाउड होता है, जैसे कि kite, kite, ky, की. हमारा k साउंड इस केस में लाउड साउंड करता है. जैसे ही लाउड k से स्टार्टिंग है, आप इसको जज कर सकते हैं कि ये k होगा. बट अगर यही I और E C के k साउंड से ज्वाइन हो जाए तो ये थोड़ा सा लो एंड सॉफ्ट साउंड करता है, जैसे कि सर्कल, सेंट, सॉफ्ट. ये सी क नहीं फिर स साउंड करने लगता है. तो I और E के साथ जब क साउंड के इन दो अलग अलग अल्फाबेट यूज करते हैं तो ये क साउंड अलग अलग साउंड करने लगते हैं, और इन साउंड से हमें ये पता पड़ सकता है कि इसमें हमें C यूज करना है या क. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. नाउ रूल नंबर 3. अगर मिस्टर K N साउंड के साथ कोई न स्पेलिंग स्टार्ट करें तो हमारे K को सांप सूंघ जाता है, यानी K का कोई साउंड नहीं निकलता है. बिलीव नहीं हो रहा? बताइए, स्पेलिंग ऑफ नॉलेज KNOWLEDG, क्या उसमें K साउंड आता है? हम कहते हैं ना I don't know, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? KNOW, क्या उसमें K साउंड करता है? नाइट राइडर्स KNIGHT, क्या उसमें K साउंड करता है? नहीं ना. तो ये भी एक छोटा सा ट्रिक है. अगर K और N साथ हो तो K का साउंड क म्यूट हो जाता है और N लीड करता है. ठीक है, ये 3 छोटे रूल्स अपनी लाइफ के लिए याद रखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी. लेट्स मूव अहेड. सो किड्स, today we are going to learn new sound which is k. Lolo, which sound we are going to learn? Ka. Good. प्रॉब्लम पता है क्या है? साउंड एक है बट अल्फाबेट दो है. दे बोथ आर सेइंग कि हमें क चाहिए. व्हाट टू डू? नाउ इस कंफ्यूजन के साथ C एंड K दे बोथ आर शेयरिंग सेम साउंड क. दोनों को ही क साउंड चाहिए. सो वी हैव टू लर्न C एंड K. इन दोनों का साउंड क्या होता है? क्या होता है लोलो? का. यस. वेल, व्हाइल स्पीकिंग K में से तो क साउंड ही निकलता है, बट समटाइम्स इट्स कंफ्यूजिंग क्योंकि C में से स साउंड है. बट स साउंड तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ना लोलो. स साउंड किसके लिए? S. वेरी गुड. यस, स साउंड फॉर S. तो इसीलिए
C को S साउंड तो नहीं दे सकते थे, दैट्स वाई C ने चूज किया क साउंड। तो C and K they both are sharing क साउंड। नाउ इन दोनों की पोएम्स थोड़ी डिफरेंट हैं, ओके? और पोएम्स डिफरेंट है तो इनके एक्शंस भी डिफरेंट हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं C का क साउंड, तो उसका एक्शन होगा both hand up and clicking. What will you do? You will raise your hand and you will do clicking. This means I am talking about ka, but C ka ka. Got it? Let's recite the sound. We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. So Lolo, have you enjoyed the song? Yes, a lot. Chalo, now tell me few words which start with ka sound. But remember, it should be C, not K wala ka. Okay? Cow. Very good. One more. Crow. Cow. Crow. Yes. It's cow, crow. Will you tell me few words? Coat. Yes. Papa wears coat. Any more words? Think. You brush your teeth with, yes, Colgate. Bingo. Some more words. What we drink? Hot and cold. Coffee. Very good. Now let's move to the another word which shares same sound. It's K. Curve. First recite the poem, okay? And then I will tell you the action. Let's recite with us. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Flying in the sky. Kites are flying in the sky. So, have you enjoyed our poem? Now, if it is ka, which is C ka ka, so that time we do action clicking. But if it is ka of K, we have to do action this way. Look up and do it. Why we are doing this? Yes, because it is kite. We are doing action of flying kite. Very good and very smart. Lolo, you got it? Sound एक है, but alphabets दो हैं और action भी दो हैं. Okay? Okay. Don't get confused. If I will say, which sound is this? What will you say? I will go. If I will say, which sound is this? What will you say? Go. Very good. But remember, they both are different alphabets. Okay? Let's move to the another word. So, today my next alphabet is, yes, I know E. But we will not pronounce it as a E. What we are going to say, its name is E. Have you seen this in Hindi? एड़ी बोलते हैं ना हम से ए. We pronounce it ए. Kids, most of the kids confused with this sound and I sound. Are you also confused? I says E and E says E. Not A. A is for A. So don't get confused. Just remember it. I says E and E says E.
They are little tricky sounds, but if you practice, they will not confuse you. Okay, now which word strikes in your mind when you see E? ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे पहले E से स्टार्ट होता है दिमाग में? Yes, egg. So my action for this sound is same. We will pretend like we are breaking an egg. Egg, egg. This is our action. What we are going to do? Egg, egg. Okay? E says egg, egg. So, got it? Okay, Lolo? Okay. Good. So now we are going to recite poem of egg sound. Let's recite with us. Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this. Hey Lolo, have you enjoyed this rhyme? Yes, a lot. And you remember what is the action for E alphabet? Yes. Crack an egg in this way. Okay? Crack an egg. Very good. Kids, now who will tell me few words which start with E sound? Elephant. Very good, Lolo. Cute boy. Elephant. Some more words. Elbow. Very good. Elbow. Enjoy. Very nice. Kids and parents. E sound basically says L. लेकिन most of the cases में spelling में E अपना sound change करता है. For an example, E word की spelling English. यहाँ पे E as a E ही pronounce करते हैं. In the same way, England, English, encourage में N हो जाता है. So E का sound अलग अलग spellings में change होता रहता है. So we call it as tricky sound. It's really tricky. But for starting purpose, we teach A. And we also give examples with A sound. But later on, when kids study, they will come to know that E change its sounds. Okay? Now, today's last sound. What is this? H. And you may think H. Ma'am, it sounds ch. It's not sound ch. It sounds h. H sounds h. And you know what the action is? What happened when you run fastly? What happened when you jump and jump and jump? What we do? Okay? We breathe heavily. This is what the action of sound. So when I will ask kids, what is the sound of this action? What will you say? Lolo, tell me. What is the sound of this action? Very good. And comes from H. Very good. Little tricky, but I know you all are smart and you learn it fastly. Now let's recite this poem quickly. I like to hop, 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 up and down. I like to hop, 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 all around. I like to hop, 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 up and down. Hope you have enjoyed this poem. Learn it nicely. Okay? And now, who is going to tell me words with start with her sound? Lolo, first it's your turn. Tell me few words which start with her sound. Hello. Yes. When we meet someone, what we do? Hello. We shake our hand. Hello. Very good. One more word.